वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। मोहसिन अकरम मुझे कहते हैं। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स के यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम पेरा पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेशन एक्ट 2024 कर रहे हैं और इसका ये दूसरा चैप्टर है। दिस चैप्टर इज़ अबाउट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी। मतलब इसकी ये जो इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी है ना, इसकी इस्टेब्लिशमेंट, इसके क़याम से मुताल्लिक पढ़ेंगे। जो इसका सेक्शन 3 है, 2 के अंदर क्या था? 2 के अंदर थी डेफिनेशंस, और एक सेक्शन के अंदर क्या था? एक सेक्शन के अंदर इसका बनना और इसकी कमेंसमेंट और आगाज़ वगैरह, नाम वगैरह इसका बताया गया था एक सेक्शन के अंदर। सेक्शन 3 इज़ अबाउट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी। According to the section, the government shall by notification in official gazette establish an authority to be known as the Punjab Enforcement and Regulatory Authority for carrying out the purposes of this act। यानी हुकूमत सरकारी गज़ट में नोटिफिकेशन के ज़रिए एक अथॉरिटी कायम करेगी जिसे पंजाब नफाज यानी पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम दिया जाएगा ताकि इस कानून के मकासद को पूरा किया जा सके। According to the section, the authority shall be a body corporate having perpetual succession and common seal with power to enter into contract, acquire or dispose of property and may by its name sue or be sued। अथॉरिटी एक कॉरपोरेट इदारा होगी जिसकी दायमी तसलसल और मुश्तरका मोहर होगी। इसे मुआहिदा करने और जायदाद हासिल करने या बेचने का इख्तियार हासिल होगा और ये अपने नाम से मुकदमा कर सकती है या इसके ख़िलाफ़ मुकदमा किया जा सकता है। मतलब इट वुड बी अ कंप्लीट ऑफिशियल एंटिटी। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द अथॉरिटी शेल बी एट लाहौर। इसका हेडक्वार्टर, दारुल हुकूमत इसका कहाँ होगा, हेडक्वार्टर कहाँ होगा? इस अथॉरिटी का लाहौर के अंदर होगा। विद सच रीजनल ऑफिसेज, जिसके अपने रीजनल ऑफिसेज होंगे। इन सच अदर एरियाज़, ऐसे एरियाज़ के अंदर एज अथॉरिटी में डीम अप्रोप्रिएट, जिसे जो कि अथॉरिटी को लगेगा कि भाई ये वाले एरियाज अप्रोप्रिएट है। मतलब जो इसका सेक्शन 4 है, इट टॉक्स अबाउट कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब भाई जो अथॉरिटी है इसकी तरकीब क्या होगी, कैसे बनेगी, कंपोज कैसे होगी। द अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स एंड आर चेयरपर्सन्स। जो अथॉरिटी होगी वो मेंबर्स और चेयरपर्सन पे कंसिस्ट होगी, जिनके अंदर कौन कौन होगा? चीफ मिनिस्टर पंजाब होंगे चेयरपर्सन, और चीफ सेक्रेटरी पंजाब होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होंगे, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट होंगे, ये भी मेंबर होंगे, सेक्रेटरी सर्विस विंग सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होंगे, सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन विंग होंगे सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, और सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से होंगे, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होंगे, और सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट होंगे, और सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट भी होंगे। इसके अंदर 3 मेंबर्स होंगे इंक्लूडिंग 1 फीमेल। उन 3 में से जो कि प्रोविंशियल असेंबली से होंगे उनमें से एक खातून का होना ज़रूरी होगा। और उन 3 मेंबर्स में से जो कि प्रोविंशियल असेंबली सूबाई असेंबली में से होंगे पंजाब की, उनको नॉमिनेट कौन करेगा? स्पीकर नॉमिनेट करेगा। ये यहाँ पे एक तो उनमें एक फ़ीमेल मेंबर होगी, ये भी MCQs आ सकता है, उसको नॉमिनेट करेगा कौन करेगा? ये MCQs या क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। यानी उनके अंदर 3 अरकान, जिनमें से एक खातून रुकन भी शामिल होगी जो स्पीकर की तरफ से पंजाब सूबाई असम्बली से नामजद किए जाएंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर है इसीलिए। इसके अलावा 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी होंगे इंक्लूडिंग 1 फीमेल। उन चारों में से भी एक खातून होना ज़रूरी है टू बी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन पैनल। उसको जो प्रोविंशियल असम्बली से होंगे उनको नॉमिनेट करेगा सूबाई असम्बली का स्पीकर, और जो 4 मेंबर वो रिकमेंडेड बाय सिलेक्शन पैनल होंगे और उनको गवर्नमेंट यानी सरकार हुकूमत अपनी सिफारिश सेलेक्ट करेगी या उनकी सिलेक्शन वहाँ से होगी। और इनका जो एक मेंबर होगा वो डायरेक्टर जनरल यानी DG भी होगा। इस सेक्शन के तहत द चेयरपर्सन में डेलीगेट हिज हर अथॉरिटी टू द वाइस चेयरपर्सन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑल और एनी फंक्शन अंडर द एक्ट।
In the absence of chairperson, the vice chairperson will chair the meeting. یعنی اس قانون کے تحت چیئرپرسن اپنے تمام یا کسی بھی فعل کی انجام دہی کے لیے اپنے اختیارات وائس چیئرپرسن کو تقویض کر سکتا ہے. چیئرپرسن کی غیر موجودگی میں وائس چیئرپرسن اجلاس کی صدارت کرے گا. The appointment of all members shall be notified in the official gazette. Notwithstanding anything contained in subsection 1, the authority may co-opt in any meeting the administrative secretary of the relevant department responsible for the enforcement and implementation of scheduled laws. یعنی ذیلی دفعہ ایک جو ابھی ہم نے پڑھی اس کی کسی بھی بات کے باوجود، ذیلی دفعہ ایک کون سی ہے جو ابھی ہم نے پڑھی، اس کی کسی بھی بات کے باوجود اتھارٹی کسی بھی اجلاس میں متعلقہ محکمے کے ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری کو شامل کر سکتی ہے جو شیڈول قوانین کے نفاذ اور عمل درآمد کے ذمہ دار ہوں گے. مطلب جو اوپر والے لوگ کمیٹی ہیں نا، ان کے علاوہ بھی یہ بات الگ سے سچ ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی اتھارٹی کسی بھی اجلاس بلا کر اس کا جو ہے ایڈمنسٹریٹو اس کا اسٹرکچر، اس میں سیکٹری کو شامل کیا جا سکتا ہے، اس محکمے کے متعلقہ ایڈمنسٹریٹو سیکٹری کو. The independent members shall be appointed for a period of 3 years. کتنی دیر کے لیے انڈیپینڈنٹ ممبرز سلیکٹ ہوں گے؟ MCQs آ سکتا ہے 3 years, but he shall serve during the pleasure of the government. اس ایکٹ کا جو 5واں سیکشن ہے، this is about selection panel، یعنی انتخابی پینل جو اس کابینہ وغیرہ کو منتخب کرے گا. There shall be a selection panel consisting of 3 persons other than serving public servants or elected representatives to be nominated by the Chief Minister for the selection of independent members of authority. یعنی ایک انتخابی پینل ہوگا جس میں 3 ایسے افراد شامل ہوں گے جو سرکاری ملازمین یا منتخب نمائندے نہ ہوں، جنہیں وزیر اعلیٰ آزاد ارکان کی تقرری کے لیے نامزد کریں گے. The selection of independent members shall be by majority and the process shall be completed within 30 days of the commencement of process of appointment. یعنی آزاد ارکان کا انتخاب اکثریتی رائے سے ہوگا اور تقرری کے عمل کی شروعات سے 30 دنوں میں مکمل کیا جائے گا. The selection panel shall invite applicants or applications from the public for selection of independent members of the authority and shall, after interviewing eligible candidates, forward its recommendations to the government to their appointment as independent members. یعنی انتخابی پینل عوام سے درخواستیں طلب کرے گا، اہل امیدواروں کے انٹرویو کے بعد اپنی سفارشات حکومت کو آزاد ارکان کی تقرری کے لیے بھیجے گا. The Director General shall provide the Secretariat support to the selection panel to carry out their official businesses. Director General جو DG ہوگا انتخابی پینل کو Secretariat سپورٹ فراہم کرے گا تاکہ وہ اپنے سرکاری امور سر انجام دے سکے. ابھی بات کر لیتے ہیں سیکشن 6 کے بارے میں، کوالیفیکیشنز اینڈ ڈسکوالیفیکیشن آف انڈیپینڈنٹ ممبرز. یعنی وہ جو ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے نا انڈیپینڈنٹ ممبرز کی اس پینل کے تحت، ان کی آزاد رکنی، ان کی اہلیت اور نااہلیت کے بارے میں یہ سیکشن 6 ہے. According to the section, an independent members shall be of impeccable integrity and proven professional competence in the fields of social work, law, administration, education اور corporate sectors. جو آزاد رکن ہے وہ بے عیب دیانت کا حامل اور سماجی کام، قانون، انتظامیہ، تعلیم یا کارپوریٹ شعبوں میں ثابت شدہ پیشہ ورانہ مہارت رکھتا ہو. A person shall be disqualified from becoming an independent member of authority if he، کوئی شخص درذیل وجوہات کی بنا پر اتھارٹی کا آزاد رکن بننے کے لیے نااہل ہوگا اگر he has held any public representative office or he has remained a public servant in the 6 months immediately preceding his appointment as independent member. اگر اس نے آزاد رکن مقرر ہونے سے 6 ماہ پہلے کوئی عوامی نمائندہ عہدہ رکھتے ہوئے یا سرکاری ملازم رہ کر کام کیا ہو، یا پھر if he is found suffering from any physical or mental incapacity or illness، اگر اسے کوئی جسمانی یا ذہنی معذوری یا بیماری لاحق ہو تو بھی، یا پھر
is declared bankrupt, a loan defaulter or tax evader, अगर वो दिवालिया हो चुका हो, कर्ज की अदायगी में नाकाम हो या टैक्स चोरी करने वाला हो, या फिर holds an office in the service of पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की सर्विस में कोई ओहदा रखता हो मौजूदा, या फिर is in the service of any statutory body or any other body which is owned or controlled by the government, or in which the government has a controlling share or interest, या फिर वो किसी कानूनी इदारे या किसी ऐसे इदारे की सर्विस में हो जो हुकूमत की मलकियत ज़ेर कंट्रोल हो, या जिसमें हुकूमत का कंट्रोलिंग शेयर या दिलचस्पी हो, अगर उसमें भी होगा तो भी. हैज़ बीन डिसमिस्ड, removed or compulsorily retired from the service of Pakistan on the grounds of corruption or any other form of misconduct, वो बदनवानी या किसी और किस्म की बद इंतज़ामी की बुनियाद पर पाकिस्तान की सर्विस से बरतरफ किया गया या जबरन रिटायर किया गया हो, और या फिर हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस, या फिर उसने कोई कानूनी जुर्म किया हो, क्रिमिनल कोई जुर्म से मुताल्लिक हो, और या फिर हैज़ एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या इसका किसी मफादात का टकराव हो. मतलब जो एंटिटी है, जो फर्म है, जो ये जो इदारा है, इसके मफादात के साथ अगर उसके पर्सनल इंटरेस्ट या आइडियाज़ कॉन्फ्लिक्टिंग हो तो भी उसको वो डिसक्वालीफाई हो सकता है. दोस्तों, इस दूसरे चैप्टर का जो सेक्शन 7 है, दिस इज़ अबाउट मीटिंग्स ऑफ द अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी के इजलास कब कब कैसे कैसे किस किस तरह होंगे, ये 7वें सेक्शन के अंदर बताया गया है. द अथॉरिटी शेल मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एंड शेल ऑब्जर्व सच प्रोसीजर विद रिगार्ड टू transaction of its business and meetings as may be prescribed and until so prescribed as the authority may डिटरमाइन, यानी अथॉरिटी ऐसे वक्त और जगह इजलास करेगी और अपने कारोबार और इजलासों के सिलसिले में वो तरीक़ाकार अपनाएगी जो मुकर्रर किया जाएगा, या जब तक मुकर्रर ना हो वो तरीक़ाकार जो अथॉरिटी खुद तय करेगी. मतलब पहले तो या तो मुकर्रर किया जाएगा और या अथॉरिटी टाइमली ही जो तय करेगी उन्हीं के मुताबिक ही उसके अजलास या मीटिंग्स वगैरह होंगी. द मीटिंग्स ऑफ द अथॉरिटी शेल बी प्रिजाइडेड ओवर by the chairperson or in his absence by any member nominated by him. अथॉरिटी के इजलास की सदर चेयरपर्सन करेंगे या इनकी गैर मौजूदगी में कोई भी ऐसा रुकन जो चेयरपर्सन जिसे चेयरपर्सन खुद मुंतखब करें. The quorum of a meeting of the authority shall be 1/2 of the total members. अथॉरिटी के इजलास की हद निसाब जो कुल अरकान का आधा होगी. कोरम कहते हैं कम से कम लोग जिनका होना लाजमी है इजलास होने के लिए, तो वो कुल अरकान का हाफ होगी, आधा होगी. द डायरेक्टर जनरल ऑन द डायरेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन शेल कॉल अ मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी. भाई कौन बुलाएगा मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी? डायरेक्टर जनरल या डीजी. प्रोवाइडेड दैट एनी मेंबर ऑफ द अथॉरिटी नॉट बीइंग एन इंडिपेंडेंट मेंबर मे for the purpose of any urgent matter request for calling of a meeting of the authority which request shall be laid before the chairperson by director general and chairperson shall pass appropriate direction thereupon. provided that का मतलब होता है ये बात शर्त है कि, ठीक है, मशरूता के, यानी इस बात से मशरूत है कि, ठीक है, ये बात शर्त है कि अथॉरिटी का कोई भी रुकन जो आज़ाद रुकन ना हो किसी फौरी मामले के लिए इजलास तलब करने की दरख्वास्त कर सकता है, जिसे डीजी चेयरपर्सन के सामने पेश करेगा और चेयरपर्सन मुनासिब हिदायत देगा. मतलब वो जो आज़ाद रुकन है ना, उनमें से कोई बंदा डीजी को रिक्वेस्ट कर सकता है, डीजी चेयरपर्सन को रिक्वेस्ट करेगा, फिर कमेटी की मीटिंग है वो हो सकती है, बुलाई जा सकती है. The decisions of the authority shall be taken by majority of its members present and voting, and in the event of equality of votes the chairperson or in his absence member presiding over the meeting as the case may be shall have casting vote. अथॉरिटी के फैसले हाज़र और वोट देने वाले अरकान की अक्सरियत से होंगे, और अगर वोट बराबर हो तो चेयरपर्सन या इसकी गैर मौजूदगी में इजलास की सदारत करने वाला रुकन फैसला कुन वोट देगा. द डायरेक्टर जनरल शेल मेंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द मिनट्स एंड डिसीजंस ऑफ द अथॉरिटी
डायरेक्टर जनरल अथॉरिटी के इजलासों के मुकम्मल रिकॉर्ड और फैसले महफूज रखेगा. नो एक्ट, डिसीजन, ऑर्डर और प्रोसीडिंग ऑफ द अथॉरिटी or a committee constituted by the authority shall be valid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution of the authority. सिर्फ अथॉरिटी की तरकीब में किसी खाली जगह या ख़राबी की वजह से अथॉरिटी या इसकी किसी कमेटी का कोई अमल, फैसला, हुक्म या कार्रवाई कल अदम नहीं होगी. दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर जो सेक्शन 8 है, इट इज़ अबाउट डायरेक्टर जनरल. According to this section, the Chief Minister may appoint a Director General who shall be an officer of basic pay scale. कौन सा कम से कम basic pay scale होगा? DG का 19वां और above from Pakistan Administrative Services or Provincial Management Services PAS या फिर PMS in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed and until so prescribed as the चीफ मिनिस्टर में डिटरमाइन. यानी वज़ीर आला एक डायरेक्टर जनरल मुकर्रर कर सकते हैं जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का बंदा होगा, जिसका बुनियादी तनख्वाह का जो स्केल होगा वो 19वां होगा या इससे ऊपर का वो ऑफिसर होगा जिसकी तकर्री ऐसे तरीके और शराइत पर होगी जो मुकर्रर किए जाएँ या जब तक मुकर्रर ना हो वज़ीर आला खुद फैसला करके उसको अपॉइंट कर सकते हैं. The Director General, subject to the general supervision and directions of the authority, shall be responsible for carrying out the purposes of this Act. Director General Authority की अमूमी निगरानी, इस ये जो एक्ट है इसकी अमूमी निगरानी और हदायत के तहत इस कानून के मकासद के नफाज का ज़िम्मेदार होगा. The DG shall be responsible for performing secretariat functions and providing secretariat support to the authority. यानी डीजी सेक्रेटरीट के काम सर अंजाम देंगे जो भी सेक्रेटरीट के अंदर होंगे और अथॉरिटी को सेक्रेटरीट की मावनत फराहम करने के ज़िम्मेदार होंगे. The Director General shall exercise such powers as mentioned in the Act or as may be prescribed or delegated to him बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. यानी डायरेक्टर जनरल वो अख्तियारात इस्तेमाल करेगा जो कानून में दर्ज होंगे या अथॉरिटी की तरफ से इसे तकवीज़ या मुकर्रर किए जाएंगे. सेक्शन 9 इज़ अबाउट कमेटीज़. द अथॉरिटी मे कॉन्स्टिट्यूट सच कमेटीज़ एज इट मे डीम, जो से लगे नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, एंड सच कमेटीज़ शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शंस एज may be assigned to them by the authority in such manners and to such extent as may be prescribed. यानी अथॉरिटी इस कानून के मकासद के हुसूल के लिए वो कमेटियाँ बना सकती है जो वो मुनासिब समझे और वो कमेटियाँ अथॉरिटी की तरफ से दिए गए इख्तियारात और फ़राइज़ को मुकर्रर तरीका और हद तक अंजाम देंगे. सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 1, ये जो ऊपर अभी हमने पढ़ा है, द चेयरपर्सन मे को-ऑप्ट एनी पर्सन अदर देन अ मेंबर ऑफ द अथॉरिटी टू अटेंड अ मीटिंग ऑफ द कमेटी. ये जो अभी ज़ीली दफ़ा हमने एक पढ़ी है, इसके तहत चेयरपर्सन अथॉरिटी के रुकन ना होने वाले किसी शख्स को कमेटी के इजलास में शामिल कर सकता है. मतलब अथॉरिटी के रुकन बेशक कोई बंदा नहीं भी है, फिर भी चेयरपर्सन की मर्ज़ी से बंदा वो इस कमेटी का हिस्सा बन सकता है. दोस्तों, जो 10वां सेक्शन है, 10th सेक्शन, इट इज़ अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी. Subject to the provisions of this act and the rules and regulations framed thereunder, the authority may exercise such powers and take such measures as may be necessary for carrying out the purpose of this act. यानी इस कानून और इसके कवायद व ज़वाबित के तहत अथॉरिटी वो इख्तियारात इस्तेमाल करेगी, वो इक़दामात करेगी जो इस कानून के मकासद के लिए ज़रूरी अथॉरिटी समझेगी. विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1, द अथॉरिटी शेल, ज़ीली दफ़ा एक की अमूमी तशरीह के बगैर अथॉरिटी दर झेल क्या क्या काम करेगी. अथॉरिटी वुड ओवरसी, spearhead and monitor the implementation of the policy guidelines issued by the government for the purposes of this act
اس قانون کے مقصد کے لیے حکومت کی پالیسی ہدایت کی نگرانی اور عمل درآمد کو یقینی بنانا. ایک اپوائنٹنگ ہیئرنگ آفیسرز فار دا پرپزز آف دا ایکٹ, قانونی مقاصد کے لیے ہیئرنگ آفیسر مقرر کرنا. دو اپوائنٹمنٹ آتھورائزڈ آفیسرز ناٹ بلو دا رینک آف 18واں اسکیل فار دا پرپز آف دس ایکٹ. تین conduct a situational assessment, systematically gather and analyze relevant data for decision making and effective planning, حالات کا جائزہ لینا, متعلقہ ڈیٹا جمع کرنا اور فیصلہ سازی و مؤثر منصوبہ بندی کرنا. چار and conduct such inquiry as is required for carrying out the purposes of this act اور شیڈول لاز, ایسے تفتیشی عمل کرنا جو اس قانون یا شیڈول قوانین کے نفاذ کے لیے ضروری ہوں. پانچ recruit and train the employees for the performance of their duties in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed and until so prescribed as may be determined by government. 6 یعنی ملازمین کی تقرری اور تربیت کرنا تاکہ وہ اپنے فرائض کو مقررہ اصولوں اور شرائط کے مطابق سر انجام دے سکے. اینڈ اسٹیبلش رولز, jurisdictions and job descriptions of employees, ملازمین کے کردار, دائرہ کار اور ملازمت کی وضاحتیں مرتب کرنا. 7 devise the mechanism of performance appraisal of employees, یعنی ملازمین کی کارکردگی جانچنے کا نظام وضع کرنا بھی ان کا کام ہوگا. ٹیک میئرس ٹو اسٹیبلش اینڈ مینٹین ڈسپلن ان امپلائیز بھی ان کا کام ہوگا. ہائر اینڈ ڈیٹرمائن دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف انگیجمنٹ آف سچ ایکسپرٹس اینڈ کنسلٹنٹس or advisors as may be required and in such manners as may be prescribed and until so prescribed as may be determined by the government. جتنے ماہرین, مشیروں یا کنسلٹرز کی ضرورت ہو انہیں مقرر کرنا اور ان کی شرائط و ضوابط طے کرنا. ایڈمنسٹر دا انفورسمنٹ اسٹیشنز بھی اور provide guidelines to the district enforcement and regulatory board and enforcement stations for carrying out the purposes of this act, یعنی ضلع نفاذ اور ضابطہ کاری بورڈ اور نفاذ اسٹیشنوں کو رہنمائی کرنا. supervise, monitor and review the progress and performance of district enforcement and regulatory boards and enforcement stations, یعنی ضلع نفاذ اور ضابطہ کاری بورڈز اور نفاذ اسٹیشن کارکردگی اور پیش رفتی کی نگرانی اور جائزہ کرنا. assign any of its employees to provide assistance to the enforcement stations, اپنے کسی بھی ملازم کو نفاذ اسٹیشنز کے لیے مدد فراہم کرنا. take all necessary measures for implementing the enforcement mechanism provided under the act, the rules and the regulations as well as schedule laws, یعنی قانون, قواعد, ضوابط اور شیڈول قوانین کے تحت نفاذ کے تمام ضروری اقدامات کرنا. recommend budget estimates to the government for the purpose of implementation of the act, قانون کے نفاذ کے لیے حکومت کو بجٹ کی سفارش کرنا. and delegate any of its powers and functions to the DG and any authorized officer, اپنے اختیارات اور فرائض کو ڈائریکٹر جنرل یا اختیار شدہ افسر کو تجویز کرنا. define the pecuniary limitations of the employees to impose fines, یعنی ملازمان کی مالی حد بندی طے کرنا تاکہ وہ ان پر جرائم عائد کیا جا سکے. اور sanctions payment of reward to any person including any employee who has made an exceptional efforts towards accomplishing the objective of the act, یعنی کسی بھی شخص کو بشمول ملازمین انعام کی منظوری دینا جس نے قانون کے مقاصد کے حصول میں غیر معمولی کوشش کی ہو. and to exercise such other functions and exercise such other powers as may be notified by the government from time to time for carrying out the purpose of this act, اور وہ دیگر فرائض اور اختیارات استعمال کرنا جو حکومت وقتاً فوقتاً اس قانون کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے نوٹیفائی کرے. یہ تمام تر کام کس کے ہوں گے دوستو؟ ہم نے کس کو پڑھا؟ اتھارٹی یہ تمام کام کرے گی، یہ ہم نے ابھی پڑھا. سیکشن 11 جو سیکشن ہے اس ایکٹ کا، دس از اباؤٹ امپلائیز آف دا اتھارٹی. ٹھیک ہے، جو اتھارٹی ہے اس کے ملازمان، دس از اباؤٹ دیٹ. دا اتھارٹی میں
on its own or through its authorized officer appoints such officers, staff, or other employees as may be considered necessary for the efficient performance of its functions in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed and until so prescribed as may be determined by the government. یعنی اتھارٹی خود یا اپنے کسی اختیار شدہ افسر کے ذریعے ایسے افسران عملہ یا دوسرے ملازمان مقرر کر سکتی ہے جو اس کے کاموں کی مؤثر انجام دہی کے لیے ضروری سمجھے. یہ تمام تر کیا کون کر رہا ہے جی؟ اتھارٹی کر رہا ہے. ایسے طریقہ کار اور شرائط کے تحت جو مقرر کیے جائیں یا حکومت کے فیصلے کے مطابق ہوں. The authority may by regulations provide for efficiency, discipline and accountability to its employees. یعنی اتھارٹی ضوابط کے ذریعے اپنے ملازمین کی کارکردگی، نظم و ضبط اور جواب دہی کا تعین کر سکتی ہے. Subject to the suitability as prescribed, the authority may transfer land or borrow any of its employees or employee of any other body, agency or department of government or on deputation basis as per policy of the government. یعنی جو اتھارٹی ہے نا بھائی صاحب، وہ مقررہ اہلیت کی صورت میں اتھارٹی حکومت کی پالیسی کے مطابق اپنے ملازمان یا کسی اور ادارے کے یا ایجنسی کے محکمہ کے ملازمان کو منتقلی قرض پر دے یا قرض پر لے سکتی ہے. جیسے آج کل پنجاب پولیس کے لوگ جو ہیں وہ پیرا کے اندر سرو کر رہے ہیں تو وہ ڈیپوٹیشن پہ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو ہے اتھارٹی وہ یہ بھی آتھورائز ہے کہ وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے ملازمان لے سکتی ہے.